Welcome back to my channel with another interesting video. In this video we are going to discuss about making pots, how we make pots. So इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे पोट्स को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं और उन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको किन मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये जानेंगे और साथ ही हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। So first question that comes to our mind is, what is pottery? The art of making pots out of clay is called pottery. कुछ भी जब आप मिट्टी से बनाते हैं उस कला को हम क्या बोलते हैं? उस कला को हम पोट्री बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अ पोटर इज मेकिंग a pot on a potter wheel and she is making beautiful patterns on the board. So ये पोटर क्या कर रहा है? ये पोटर एक पोटर व्हील जो कि सर्कुलर शेप का है उस पर एक डो को लेकर एक पोट तैयार कर रहा है, राइट? नाउ वी विल डिस्कस ऑल द स्टेप्स वन बाय वन. सो द स्टेप्स ऑफ मेकिंग पोट्री विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, very interesting also. You can also try at your home. So the step one is collecting good quality of clay. You have to first collect the good quality of clay. आपको सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी जो क्ले होती है उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक डो प्रिपेयर करना है। सेकेंड स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग अ डो बाय नीडिंग द क्ले विद वाटर। आपको फिर डो प्रिपेयर करना है, जैसे आपकी मदर आटा गूंथती है ना, आटा और पानी ले करके आप आटा गूंथती है मम्मा, उसी तरीके से हमें डो को प्रिपेयर करना होता है वाटर और क्ले से, राइट? उस डो में से अब हम एक लंप लेंगे और उसको शेपिंग करेंगे हम अपनी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर. सो थर्ड स्टेप इज शेपिंग द क्ले डो, right? Now the fourth step is drying the pot in the sun. You have to dry the pot under the sunlight, right? आपको सारे पोट्स को फिर ड्राई करना है जितने भी आपने पोट्स बनाए हैं। फिर आपको उस पर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाने हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ मेकिंग डिज़ाइंस ऑन द पोट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट? फिर आफ्टर एंड द लास्ट स्टेप इज़ बेकिंग द पोट इन एन ओवन कॉल्ड किन। हम जो पोट्स हमने तैयार करे हैं उनको हम एक ओवन, जो बहुत बड़ा ओवन है, उसमें हम रख कर उनको बेक करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन सकें और ड्यूरेबल भी हो सकें थोड़े टाइम तक के लिए. सो व्हाट डू यू मीन बाय किन? किन इज़ a huge oven that is used to bake pots, right? I hope all the steps are clear to all of you. Okay. Then moving on to the next slides, we will discuss the methods of making pots. The first method that we discussed is the potter's method, potter's wheel method, right? This is already we discussed. सेकेंड इज़ द पिंच मेथड. पिंच मेथड में हम क्या करते हैं, हम हाथ से ही प्रेस कर करके, जैसे आप प्लास्टिसिन क्ले यूज़ करते हो, मोल्डिंग क्ले यूज़ करते हो और उससे कुछ भी शेप हाथ से ही बना देते हो, वो दैट इज़ द पिंचिंग मेथड, राइट? Coil method we will discuss, and the fourth one is the slam method. So coil method, this is again very interesting method. We roll the clay out on a flat surface until it forms a rope like shape called coil. जब तक हमारी coil, जब तक हमारी क्ले एक रोप की तरह, रस्सी की तरह की शेप नहीं ले लेती, तब तक हम उसको रोल करते हैं एक फ्लैट सरफेस पे। और जब वो कॉइल्स बन जाती हैं हम उनको क्या करते हैं, द कॉइल्स आर यूज्ड एज अ वे ऑफ बिल्डिंग वॉल्स ऑफ द पीस बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। हम एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, राइट? एक के ऊपर एक, वन लेयर एट अ टाइम. सो this is how coil method is done. And now it's a question for you. Which state is famous for pottery items all over the world? You guess right. Yes, it is Uttar Pradesh, in which we are living, right? So Uttar Pradesh is the state that is famous for pottery items all over the world. Now there are some specific potteries which are again famous from Uttar Pradesh. That is the black pottery, which is famous from Azamgarh, right? Khurja is famous for blue pottery. Khurja is famous for blue pottery and Azamgarh is famous for black pottery. So these are the points that you have to remember, right?
Okay, so moving on to the next slide, these are the different pottery items, right? This is a cup, this is a kettle, this is pot, this is surai, this is jug, this is kullad. So there are different pottery items that we can make out of clay, right? Or we use, and they are also eco-friendly items, right? Now we will discuss some of the important questions. So first one is you have to rearrange these sentences. This is the process of making poets, right? And these sentences are jumbled, so you have to arrange them in a proper sequence so that the meaningful process will form, and you have to rewrite them. So let us begin whatever we have discussed. Now it's time to check your knowledge, right? So how much you have gained. So first step is collecting good quality clay. The second step is preparing the dough by kneading the clay with water. The third step is shaping the clay dough. Now the fourth is drying them in the sun. Very good. Now the fifth step is making designs on the pot, and the last, which is very important, is baking the pot in the kiln. So you have to understand all the process, all the steps of making pots, right? नाउ वी विल डिस्कस व्हाई शुड वी यूज़ पॉटरी आइटम्स. ये जनरली ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें पॉटरी आइटम्स क्यों खरीदने चाहिए. Because it is very crucial that we should purchase pottery items as they provide livelihood to the poor potters. ये गरीब कुम्हारों को एक उनका रोज़गार का माध्यम है, उनको रोज़गार प्रोवाइड करता है. तो हमें हमेशा पोट्री आइटम्स खरीदनी चाहिए, और वो भी लोकल मार्केट से. वी शुड नॉट बाय items that are imported, right? Or the imported items we should not buy. We always buy handmade local items. They are eco-friendly items also. So you have to remember 2 points in this. सबसे पहले वो कुम्हारों को, गरीब कुम्हारों को रोज़गार प्रोवाइड करेगा. दैट इज़ द लाइवलीहुड. दे प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पुअर पोर्टर्स. एंड वो वातावरण के अनुकूल भी है. दे आर इको फ्रेंडली आइटम्स ऑल्सो, राइट? Now read the following paragraph and answer the following question. Pottery items provide livelihood to poor potters. They are also eco-friendly items too. We have been told, हमें हमेशा बोलते हैं बड़े कि we should buy handmade items like floating candles, earthen diyas, earthen pots, etc. on different occasions from local market. Again, why should we buy handmade items from the local market? Because the handmade items provide livelihood to the लोकल आर्टिजन्स, जो लोकल कलाकार होते हैं हमारे उनको रोज़गार मिलता है. और साथ ही जो हैंडमेड आइटम्स होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं. दैट इज़ वाई वी शुड बाय लोकल हैंडमेड आइटम्स फ्रॉम द लोकल मार्केट. नेम एनी कूल फ्रोजन डेजर्ट इन स्मॉल अर्दन पोट्स. ये सबको पता होगा. I think it's very tasty dessert that everyone enjoys in summer, right? So it's, yes, you guessed right? So it's ice cream, yes, or kulfi. My grandmother says we must use pottery items as they provide a livelihood to the poor potters. They are eco-friendly items too. So, do you agree with my grandmother? Yes, we always agree with every grandmother, because this is ये generally her grandmother बोलती हैं. And state why, again we have to write those 2 points. They provide a livelihood to the poor potters, and they are eco-friendly items. They add benefits to योर हेल्थ ऑल्सो. जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं और खाना बनाते हैं, तो आपकी हेल्थ को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं, राइट? सो कुछ बेनिफिट्स आपकी हेल्थ को मिलते हैं उससे. These days, people have started using more of metallic pots for cooking and storing food items. Metallic pots are long lasting and do not need मच केयर एंड इम्पोर्टेंस. सो ये क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि पीपल ने अब मेटालिक पोट्स स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना कुकिंग के लिए और स्टोर करने के लिए फूड. और मेटालिक पोट्स सबको पता है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती. आपने एक बार ही परचेज़ किया, लंबे समय तक चलते हैं. बट वी शुड यूज़ पोट्री आइटम्स एज दे आर इको फ्रेंडली एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पुअर पोटर्स.
Exactly. Why people have started using metallic pots these days? पीपल ने क्यों स्टार्ट कर दिए हैं मेटालिक पोर्ट्स यूज़ करने? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, राइट? वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, वंस यू परचेज वो इट विल गो ऑन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, वो नंबर ऑफ ईयर्स तक चलते हैं. बट दे आर नॉट they are not healthy, they are not beneficial to your health, right? Aluminium utensils are very harmful for your health, right? So we should avoid using aluminium utensils. Aluminium is a metallic, right? So metal. And why should we use pottery items? We already discussed, because they are eco-friendly items and they provide livelihood to the poor potters. हम हमें pottery items ही जनरली यूज करने चाहिए, right? So thank you everyone for watching this video. If you want such more videos, you can subscribe to this channel, and thank you everyone. Have a nice day.